The big news we're tracking, and a major embarrassment to the newly sworn in Bihar government. It has come to light that their new law minister, Kartikeya Singh, is facing arrest himself in a kidnapping case, and that a warrant was issued against him before he became a minister. Kartikeya Singh is accused, along with 17 others, of a kidnapping case that dates back to 2014. He's charged with planning the kidnapping of a builder with an intent to murder. Interestingly, the minister was supposed to surrender in Danapur court on August 16 in this case, the same day he took oath as the new law minister. BJP has come out all guns blazing against the state government, accusing it of Jungle Raj all over again. Chief Minister Nitish Kumar, though, just said that he had no such idea about this case, but did not announce any corrective action against the RJD MLC in his government. Let's break down a bit about the details of the charges against the Bihar law minister. Kartikeya is accused in this 2014 kidnapping case of a Patna-based builder. He faces kidnapping charges with an intent to murder, as I mentioned, booked under sections 363, 364 and 365. So that's kidnapping, kidnapping with an intent to murder, and unjustified kidnapping with an intent to imprison. Earlier in February 2017, Patna High Court had rejected his anticipatory bail petition. Last month on July 14, an arrest warrant was issued against him, after which the court asked him to surrender on August 16. Remember, yesterday, the day he took oath as a minister. Let's listen in, of course, to what both sides are saying. But this is, of course, a case where irony is certainly dying a lot of deaths. The big question continues to be, why has there not been any action so far? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। नहीं, वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली है। भाजपा और जदयू नीतीश जी साथ आए थे बिहार को अपराध, खौफ और जंगल राज से मुक्त करने के लिए, और अभी आपको एक हफ्ता नहीं गुजरा, कमाल का बिहार में संकेत दे रहे हैं। Let's go across to our guest joining us. In fact, Nikhil Anand of the Bihar BJP is with us. Nikhil Anand, you've of course made the charge that you've made today, but there hasn't really been any response of taking any action against this grave irony and injustice that is playing out in Bihar. How do you respond to the government's response today and Nitish Kumar's response today? It is a matter of really a great surprise. I see that the way Nitish Kumar has succumbed to the pressure of RJD is really surprising. We took oath that we will provide a good governance in Bihar based on corruption-free, crime-free, sustainable development. But you see that the kind of people have been inducted into the ministry of Nitish Kumar is really a matter of surprise. A dozen of people who have become the minister, they are charged with murder, kidnapping, POSCO Act, and even Gunda Act. It is a matter of surprise. And the case which is much in debate is the new law minister of Bihar. Yeah, let's stick to this case because, you know, the accusation, Mr. Nikhil, can be made against all governments, including BJP governments, that you've had not just MLAs but also ministers who've had charges and serious charges against them. So let's stick to this particular case. And the most horrifying aspect is that this man has a warrant against him. He's now the law minister. He can use the machinery, the state machinery, to quash those warrants. Yeah, you see that who is Kartikeya Kumar? Kartikeya Kumar is a fugitive, and he is a disciple of infamous Anant Singh, who has been an MLA of RJD, and he lost because of some court case. And it is a matter of surprise that he was denied bail by the High Court, and later on an additional district judge listens to his plea and he's issued no cursive. How can an additional district judge can listen to what High Court has rejected? So it is a matter of cognizance against additional district judge
and hope that Patna High Court will look into this matter. The way law and the Constitution of India is abused in this particular case, and Nitish Kumar is keeping mum. He is denying that he even knows the fact. It is the prerogative of the chief minister of any state to identify the person whom he wants to induct into the ministry, see his background, see all the cases, but he is just closing his eye and he has succumbed to the pressure of RJD. Well, I was And hoping surprisingly, to be able to put Laluji that is question his to the friend. JDU representative who's late on the show. Before I do that, very quickly, you believe that this is a manifestation, one, of Gunda Raj, Jungle Raj returning, where there is no accountability, frankly, and not the kind of accountability we expect today in today's polity. And secondly, this is a manifestation of the fact that Nitish Kumar is no longer in control of the government in Bihar. You see, just because I belong to BJP, I'm not simply making charges. But it is a second inning of Tejasvi Yadav. I thought that he must have matured. But the kind of people he is surrounded, the kind of minister he has inducted from his quota, most of them, 9 of them are having criminal charges. Who are these people? They have inducted into the ministry. They don't find any other person, even in any community, to present himself, who must have enhanced his image. But the way Tejasvi Yadav seems that he lost everything and he has himself succumbed to the pressure within his party, and Nitish Kumar has succumbed to the pressure of RJD. No, so the political And message where is one Nitish thing. Kumar ji is What has heading been surprising is is that Bihar. there has been no comments that suggest that they will correct this situation. I mean, how can you have a law minister who has warrants against him? That just is not how the law machinery can work. But anyways, I want to play out some reactions of what people have said of this situation from both sides. Let's listen in. उनको कोर्ट में बुलाया गया था उस दिन वो यहाँ पे ओथ ले रहे थे. आई एम नॉट अवेयर अगेंस्ट कार्तिक सिंह एलिगेशन, बट इतना एश्योर कर सकते हैं कि अगर चीजें स्थापित होता दिखेगा, प्रूव होता दिखेगा एलिगेशन, तो कार्रवाई करने में कुछ हम लोग परहेज नहीं करेंगे. सरकार की पहली नीति, पहला कमिटमेंट, फर्स्ट कमिटमेंट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस. लेकिन आप बिना जाने बिना समझे, अब किसी ने कहा कि मामला स्टे है, किसी ने कहा कि नहीं उन पर वारंट स्टे तो है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ 1 सितंबर तक स्टे है. अब तो बताइए दोनों बातें आप ही कर रहे हो. All right, Love Kumar of the JDU is finally with us. Love Kumar, ये क्या सिचुएशन है? लॉ मिनिस्टर ही खुद भगोड़े हैं, उनके अगेंस्ट ही वारंट है. जब उनको सरेंडर करना चाहिए था तब वो शपथ ले रहे हैं. ये क्या मजाक हो रहा है बिहार में? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है. 12 तारीख को उन्होंने कोर्ट से मर्जी ले लिया था और कोई कर्सिव एक्शन कोर्ट ने 1 सितंबर तक मना किया है, तो इसमें भगोड़े होने का कहां से सवाल उठता है? नहीं तो आपने जो जिस एमएलसी के खिलाफ वारंट है उनको क्यों बनाया लॉ मिनिस्टर? ये बहुत सारे केसेस बहुत लोगों पर हो जाते हैं. वारंट होने से कोई सजा याफ्ता नहीं हो जाता है, ये भी तो आप जानती है ना बहुत अच्छे तरीके से. नहीं तो उनको बरी हो जाने दीजिए ना, फिर आप बना लेना मंत्री. अरे तो फिर प्रधानमंत्री जी भी केसेस में बरी हो जाए ना, गृह मंत्री जी भी केसेस में बरी हो जाए, फिर बना लेना. भाई साहब उनके खिलाफ नहीं है केसेस कोई. चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश पर कितने केसेस हैं? 147, 148, 149 में, 307 में, 295 में, कितनी धाराएं लगी है, कितनी संगीन धाराएं लगी है. इनके खिलाफ वारंट भी इशू हुआ है क्या? बिना वारंट इशू हुए जेल भी गए हैं, वो जेल घूम कर रहे हैं. नहीं वो इशू नहीं है. इशू ये है कि जिस मंत्री के खिलाफ वारंट है उसको आप लॉ मंत्री बना रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन कैसे होगा? अब देखिए, जैसे ही कोर्ट का कोई डिसीजन आता है निश्चित तौर पर संज्ञान लिया जाएगा और इसमें डिसीजन किया जाएगा. नीतीश, आप मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं था. एज अ चीफ मिनिस्टर ये तो कोई डिफेंस नहीं होता कि मुझे नहीं पता था कि मैं किसको मंत्री बना रहा हूं और उसके खिलाफ क्या इशू है, क्या केस है. एक बात आप बता दीजिए,
सारी चीजें माननीय नीतीश कुमार जी से सवाल पूछा गया कि उन पर वारंट इशू हुआ, उन्होंने बोला जानकारी में नहीं होगी, बोला नहीं है। तो इसमें कौन सा, इसमें बहस का विषय ही नहीं है। आज जो बीजेपी कर रही है, you see the psychology and understanding of JDU people. जी हाँ They बोलिए। don't understand. They don't think that it is a matter of debate even. हाँ, लव कुमार इज सेइंग कि कोई बड़ी बात But नहीं है। simply what happened to the zero tolerance policy of Nitish Kumar? नहीं, जीरो टॉलरेंस Nitish की ji पॉलिसी पूरी has तरह से always है, been लेकिन very आज की particular तरह से ध्यान भटकाया on जा रहा है। saying that there will be no tolerance when it comes to crime and corruption. But this new government has shown a picture which is very horrible. ओके People of Bihar ओके निखिल जी एक are सेकंड afraid रुक जाइए, मैं आपकी बात that- लव कुमार के पास लेके जाती हूँ। लव कुमार, ये बीजेपी ये कह रही है कि ये बिल्कुल साबित करता है, सिद्ध करता है कि बिहार में ये आरजेडी की सरकार आने के बाद जिसके साथ जेडीयू वापस गई है, फिर से जंगल राज अब शुरू हो गया है। और जिस तरह से तो आप बात कर रहे हैं, आप तो आरजेडी से नहीं है, आप जेडीयू से हैं। आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात ही नहीं है, स्टैंडर्ड्स ही चेंज हो गए। मैं कह रहा हूँ कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे आज भी हमारी सरकार चल रही है। तो ये जीरो टॉलरेंस डिस्प्ले कब करेंगे आप? जहां तक केसेस की बात है, तो मैं तो बोला कि सैकड़ों 42% केंद्र में मंत्री हैं, उन पे केसेस है। नहीं सर, केस की बात नहीं है। अ केस डज नॉट बार समबडी। सर सुनिए मेरी बात, केस की बात नहीं है, केस तो 2014 से चल रहा है। बात है कि इनके खिलाफ वारंट इशू हुआ है। आपको नहीं लगता कि कुछ तो प्रोप्राइटी होनी चाहिए थी कि ऐसे बंदी को लॉ मिनिस्टर तो ना बनाए? कोर्ट ने इनके गिरफ्तारी पे रोक लगाया हुआ है। 1 सितंबर तक कोई कर्फ्यू एक्शन नहीं लेना है इनके खिलाफ। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं तो अब होगा क्या कोई एक्शन इनके खिलाफ? अब तो बात ये हो गई ना, अब तो लॉ मिनिस्टर हो गए ये। जी, तो मिनिस्टर इतने सारे, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री जो भी इस तरह के बात आएगी, भाजपा के पास कौन सा ऐसा यंत्र है जैसे ही उनके पास से हटने के बाद सारे लोग जंगल राज, सारे इनके साथ है तो जंगल राज था। जी, आपके बीजेपी के साथ रहे तो सब कुछ मंगल मंगल है, और जैसे ही बीजेपी से अलग हुए सब अमंगल होने लगता है। इनके यहाँ शुभेंदु अधिकारी के पास ईडी लगता है, जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं उनका पाप धुल जाता है। नहीं तो बीजेपी कुछ कर रही है, वो डिफेंस नहीं है कि आपकी सरकार भी कर रही है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा है। नहीं कर रहा हूँ। लव कुमार जी, मेरे पास अब 1 ही मिनट बचा है, मैं आपसे एक फाइनल सवाल पूछना चाहती हूँ। बीजेपी ये कह रही है कि ये एक सेकंड रुकिए। लव कुमार, बीजेपी ये कह रही है, और बात बहुत लोगों ने ये कहा था जब आपकी सरकार बन रही थी आरजेडी के साथ, कि नीतीश कुमार अब फिगर हेड है, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, असली सरकार तो आरजेडी चला रही है। और द फैक्ट दैट नीतीश कुमार हैज नॉट इवन बीन एबल टू टेक एक्शन ऑन दिस मैटर, ये तो यही प्रूव कर रहा है ना कि आपके पास तो पावर ही नहीं है। नो, दिस इज नॉट ट्रूथ। नीतीश कुमार हमेशा करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और लेते रहेंगे। अभी पेट में ज्यादा दर्द बीजेपी के इसलिए हुई है कि एक चेहरा ऐसा है जो पूरे देश में आज एक विमर्श पैदा हो गया है उनके आने के बाद, कि मोदी को चुनौती देने वाला एक चेहरा आ गया है। सर इसको पॉलिटिक्स में मत करिए मायर। The brazenness with which the government is just wanting to shove this under the carpet is definitely indicative that any standards that politicians and governments must adhere to are not being followed by the Bihar government, and of course the questions will be raised. I run out of time though. I do thank Love Kumar and others